Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. So, we had discussed the legal connotations of territory. We are going to start with the case study of the 100th constitutional amendment. ठीक है, बहुत ध्यान से देखते हैं. Good morning, everyone. So, good morning. Yesterday, we had discussed the constitutional provisions with respect to territory, and we had understood that there are broadly two kinds of territorial changes, external and internal. एक्सटर्नल मतलब जो इस देश का लैंड नहीं है, हम बाहर से कोई लैंड लाके हमारे देश में जोड़ रहे हैं या हमारे देश का लैंड निकाल के किसी को बाहर दे रहे हैं. इंटरनल मतलब we are converting a state into a union territory into state, merging two states into one, dividing one state into two. Uttar Pradesh into Uttar Pradesh and into Uttarakhand, Andhra Pradesh into Telangana, J&K into J&K union territory with legislature and Ladakh union territory without legislature. ये सारे internal होते हैं. और हमने एक चीज और सीखी that the Supreme Court in the case of ceding, which means you are transferring undisputed territory, अपने मन से टेरिटरी दूसरे देश को दे दी कि जाओ खेल लो. अगर ऐसा है so this will require a constitutional amendment under article 368 without state ratification. मतलब इस लॉ को पास करने के लिए you will require more than 2/3 of present and voting in the Lok Sabha and the Rajya Sabha separately in such a way that this number is more than half of the total strength of the house. This is also popularly called special majority 2. Everything else requires simple majority, which is nothing but more than half of present and voting. सीडिंग उस तरह का डिस्प्यूट है जो डिस्प्यूट ही नहीं है, अपने मन से दे दिया. एंड सेटलिंग, अगर आप कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी किसी और देश को दे रहे हो देन इट विल स्टिल रिक्वायर सिंपल मेजॉरिटी. लेकिन डिस्प्यूटेड ही नहीं है, आप अपने मन से दे रहे हो, तो फिर वो डिस्प्यूट नहीं हुआ. कश्मीर अकॉर्डिंग टू इंडिया इज नॉट अ डिस्प्यूट. हमारे हिसाब से हमारा ही है. तो अगर कल को हमें कश्मीर पाकिस्तान को देना है, अगर गलती से ऐसा कर दिया हमने, तो इट विल नॉट बी सीडिंग, इट विल बी सेटलिंग. रियलिटी, आई अंडरस्टैंड, रियलिटी ऑफ कश्मीर इज दिस इज कश्मीर, दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. हम इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो बाकी के कश्मीर को इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं. And this part is called Aksai Chin, which is currently under Chinese administration. इंडिया के हिसाब से ये सब कुछ हमारा है, लेकिन रियलिटी है कि यहाँ पे पीओके एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन है.
JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली में आज भी वी कीप सीट्स फॉर पीओके एंड अक्साई चिन एरिया। कोई आता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम सीट जरूर रखते हैं। यही इशू हुआ था रिसेंटली इन द केस ऑफ डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन मतलब एक स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज चेंज करना है क्योंकि पॉपुलेशन बदल गई है। यू वुड अंडरस्टैंड दिस एज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्टेट. This state, let us say, has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. अगर इस स्टेट में 8 MP constituencies हैं, they have to be drawn in such a way, the number is fixed, that you will have approximately the same number of people in across each of the 8 constituencies. उसमें इलेक्शन कमीशन आपको 15% का मार्जिन देता है. सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, राइट? सो पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड लिविंग हियर. So we will have to reduce this constituency size because the number of people has to more or less be the same. इसको हम delimitation कहते हैं कि constituency छोटी हो गई because density of population बढ़ गया. Number of constituency remains the same. हमारे देश में 543 constituencies ही हैं और ये नंबर हमने 2026 तक फ्रीज कर रखा है, 2026 तक. और ये 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1971 के सेंसस पे बेस्ड हैं. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इन 2026 दिस 1971 सेंसस का जो बेस लिया है, वी विल अपग्रेड इट टू 2011 सेंसस. उसकी वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग दैट आवर नंबर ऑफ लोकसभा एमपीज विल बी 1000 प्लस, व्हिच इज ऑल्सो अ रीजन व्हाई यू नीड टू बिल्ड अ न्यू पार्लियामेंट कॉल्ड सेंट्रल विस्तार. 500 लोग को बिठाओगे कहाँ पे, 1000 लोग को बिठाओगे कहाँ पे, जब एमपीज ही बढ़ जाएंगी तो. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई, बिकॉज यू आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एमपी कॉन्स्टिट्यूंसीज. अभी फिक्स्ड है, अभी 543 फिक्स्ड है. यूपी में अगर आई थिंक यूपी हैज 203 कॉन्स्टिट्यूंसीज, 203 सॉरी, लेट अस से नंबर, सॉरी, एमपी की सीट्स कम है यूपी में, अराउंड 50. द नंबर ऑफ सीट्स आर गोइंग टू बी मोर और लेस द सेम. कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कहां जा रही है वो बदल सकता है, उसको हम डीलिमिटेशन कहते हैं. उसके लिए सरकार एक डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट करती है. इस डीलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बिकॉज दिस इज एन इंटरनल फंक्शन. यूएस में इसका बहुत मिसयूज होता है, दैट दे रीड्रॉ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन यूएस इन सच अ वे दैट एक मेजॉरिटी वोट बैंक हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे, एक मेजॉरिटी वोट बैंक हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहे. दिस इज कॉल्ड जेरीमैंडरिंग. ठीक है, तो ये सब इंटरनल चेंज की बात हो रही है, राइट? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन इंटरनल चेंज. आपने एक स्टेट को काट के 2 स्टेट बना दिए, 2 स्टेट को जोड़ के एक स्टेट बना दिए. ठीक है, यस, 403 एमएलएस, 80 एमपीस. ठीक है, अच्छा किया गूगल कर लिया, थैंक्स. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल चेंजेस. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल चेंजेस. एंड वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड very interestingly the notions of external changes. ठीक है, notions of external changes. हम बात कर रहे हैं external changes की, which we had discussed. ये redrawing of constituencies is also not an internal change. वो delimitation order से होता है. Internal changes are only and only with respect to the boundaries of a state, not the constituencies of the state. Please remember, any change in the boundaries of the constituencies whether it is an MP constituency or an MLA constituency, is not an internal change.
इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है. द गवर्नमेंट हैज द पावर्स टू डू सो अंडर डिलिमिटेशन. उसको टेरिटरी से कंफ्यूज मत करिएगा. We've discussed this broadly yesterday. So when we talk about internal and external changes, we're extremely clear कि हम क्या बात कर रहे हैं. External change, internal change. Now, just be very clear on this. This is extremely important. We're talking about external changes. I told you yesterday there are 3 kinds of external changes. First, seeding. Second, settling. And third, claiming. Seeding, settling and claiming. अगर डिस्प्यूट ही नहीं है, अपने मन से लैंड दे दी, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, उसको कहते हैं सीडिंग. सेटलिंग मतलब हम आपस में डिस्प्यूट सेटल कर रहे हैं कि आधा तेरा आधा मेरा. सेटलिंग किसी का नहीं था, हमको वो लैंड मिल गई, जहां के झंडा गाड़ के आ गए. क्लेमिंग. It is only in the case of ceding that you require an amendment to the constitution, or that law will be called a constitutional amendment under Article 368. It is the transfer of non-disputed land. It is the transfer of non-disputed land. ये बहुत important बात है. Transfer of non-disputed land. ठीक है. कश्मीर डिस्प्यूट नहीं है हमारे हिसाब से, दुनिया चाहे कुछ भी बोले. बट वी वर डिस्कसिंग दिस इन द वेस्टर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया. इन द वेस्टर्न पेनिनसुला ऑफ इंडिया देयर इज एन इशू दैट वी हैव विद पाकिस्तान कॉल्ड द सर क्रीक इशू. दिस इज अ डिस्प्यूट. Both India and Pakistan recognize this as a dispute. Why? Because this area is very well enriched with shale gas, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है. तो पाकिस्तान कहता है कि यहां तक एरिया उनका है, हम कहते हैं कि यहां तक एरिया हमारा है. इसको हम डिस्प्यूट कहेंगे. अगर हम ये एरिया दे देते तो फिर इट विल रिक्वायर अ नॉर्मल लॉ. एंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस कि सीडिंग और सेटलिंग क्या है इज India's 100th constitutional amendment. This amendment is basically a law solving the land boundary disputes. It's called the Land Boundary Agreement between India and Bangladesh. दो 2015 में ये हमने इनैक्ट करा था. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एक्सट्रीमली क्लियरली. ऐसा क्यों है? ठीक है, देखिएगा. When we talk about the land boundary agreement between India and Bangladesh, when we talk about the land boundary agreement between India and Bangladesh, you must understand वो सिर्फ एक ही तरह की लैंड नहीं है. We are looking at multiple kinds of lands. Multiple kinds of lands. एक इशू enclaves का है. One is of adverse possessions and the other is of undemarcated areas. Adverse possessions and undemarcated I'll explain immediately. Enclaves is something that we will look at a little later. So adverse possessions क्या है? Let's understand this. If this is India and if this is Bangladesh, if this is India and if this is Bangladesh, ठीक है? Understood? The boundary between India and Bangladesh is very marshy, दलदली सी है. सबको फैलने की आदत है, तो ये बॉर्डर वाले यहां जाके फैल के बस गए, वो वाले यहां फंस गए. बॉर्डर क्रॉस कर ली. यस, अंडरस्टूड दिस. फंस गए, अब जाके बस गए. बट ये जो लैंड है, ये लैंड तो है बांग्लादेशी, यहां रहे इंडियंस रहे. दिस लैंड इज इंडियन
बट यहां रहे बांग्लादेशीज हैं। हमने कहा अब आ गए हो तो रख लो, तुम भी क्या याद रखोगे। यू आर ट्रांसफरिंग अनडिस्प्यूटेड लैंड। ये लैंड ऑफिशियली हमारी है जहां बांग्लादेशी रह रहे हैं। हमने कहा इतने सालों से रह रहे हो, अब कर लो, रख ही लो। सो व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग undisputed land, this is a case of ceding, which is why it will require a constitutional amendment. क्योंकि ये लैंड थी तो हमारी, हमने दे दी। दिस इज लाइक अर्बन सीलिंग। ये सड़क है, यहां दुकानें हैं, अब वो 20 सालों से दुकानें, अब दुकानें सड़क पे आ गई और सड़क दुकानों में चली गई है। कुछ ऐसा ही है, इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग। एडवर्स पोजेशंस, ठीक है। एंड अनडिमार्केटेड एरियाज आर एरियाज विच डिड नॉट बिलोंग टू आइदर ऑफ द टू। इंडिया ने कहा रख लो। अनडिमार्केटेड एरियाज इज नथिंग बट क्लेमिंग। अनडिमार्केटेड एरियाज इज नथिंग बट क्लेमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज समथिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वाई डिड यू रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज एडवर्स पोजेशंस आर अ फॉर्म ऑफ सीडिंग, ऑनक्लेव्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सीडिंग। नहीं तो जरूरत थी नॉर्मल कानून बनाते, शेड्यूल 1 में चेंज करते, शेड्यूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वी डिस्कस दिस। एवरी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. Only those changes which are mentioned in Article 368 are called constitutional amendments. कहते हैं ना, स्कूल डीपीएस होना चाहिए, मॉडर्न तो जमाना भी है, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, कानून तो सबका ही है। द सेम थिंग। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? ओके, दैट्स द बेसिक एक्सप्लेनेशन, राइट? यस, श्योर, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड enclaves. Now let's understand enclaves. ठीक है, enclave समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आइडिया लीजिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती क्या है। See, you must understand international boundaries are not that easy. Everybody tries their level best. You know कि आप इंटरनेशनल बाउंड्री जो बनाओ वो आप फिजिकल लैंडफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए बनाओ, है ना। कोशिश करो कि आप फिजिकल लैंडफॉर्म्स को आप ध्यान में रखते हुए बना रहे हो, करेक्ट। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। इट्स नॉट ऑलवेज द केस। समटाइम्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज रन थ्रू सिटीज। ये यूरोप में दो देशों के बीच में से इंटरनेशनल बाउंड्री जारी है। एक देश इधर है, एक देश इधर है। दिस इज द नॉर्थ कोरियन एंड द साउथ कोरियन बाउंड्री। ये देखो, यूएस और मेक्सिको की बाउंड्री सीधी लाइन खींची है उन्होंने। यहां पे ट्रम्प चचा जो है वांटेड टू बिल्ड अ वॉल, वो हो नहीं पाया। क्लियर? सो समटाइम्स बाउंड्रीज टेक इनटू अकाउंट physical geographical landforms, sometimes we can't, sometimes they are a clear line. और ये सारा खेल इंटरनेशनल बाउंड्रीज का है। और कभी कभी इन बाउंड्रीज में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है एंड दीज कॉम्प्लिकेशंस आर कॉल्ड ऑनक्लेव्स एंड ऑक्सक्लेव्स। बहुत ध्यान से देखना, ऑनक्लेव होता क्या है, बहुत ध्यान से। एन ऑनक्लेव इज अ कंट्री ए completely surrounded by a single country B. So country A is an enclave of country B. Mostly क्या होता है, landlocked countries are surrounded by 5 other countries. But country A is completely surrounded by country B. एक ही देश ने चारों तरफ से एक देश को घेर रखा है। That is called an enclave. A country or specifically an outlying portions of a country entirely surrounded by the territory of another country. ठीक है? Similarly, you have something called oxclaves. ठीक है? Similarly,
you have something called ऑक्सक्लेव्स. ऑक्सक्लेव्स भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. ये सब इंपीरियलिज्म, कलोनियलिज्म, ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, इन सब की देन है. दिस इज योर पेरेंट कंट्री, दिस इज योर पेरेंट कंट्री. आपकी कंट्री का एक अंश, दिस इज ऑल्सो योर कंट्री, बट कंप्लीटली सराउंडेड बाय डिफरेंट कंट्रीज. इनको आप लैंडलॉक्ड भी कहते हो, बट इट इज नॉट अ सिंगल कंट्री. ये एक दूसरी कंट्री का भी पार्ट है. Y is a part of country A, but completely surrounded by a lot of other countries. So Y is an exclave of Y. A portion of a country geographically separated from the main part and surrounded by alien territory. ये फर्क है. क्यों? क्योंकि ये सब भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी. इन लोगों को आजादी मिल गई, इनको नहीं मिली, तो ये अभी फंसे हुए हैं. You will see a lot of islands across Africa, a lot of islands around South America, which are still owned by the British. अभी जो न्यूज़ में था वो मेहुल चोक्स्की पकड़ा गया था, one of the Caribbean Jamaican islands. One of them are still owned by the British. One of them are still owned by the French. ये है. तो enclave ये होते हैं. And there are only and only, legitimately, there are only and only 3 countries in the world which are completely surrounded by another country. मतलब ये कंट्री इतनी है और इसके चारों तरफ एक और कंट्री. पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही जगह ऐसा होता है: वैटिकन सिटी, सैन मरीनो एंड लेसोथो. वैटिकन सिटी, सैन मरीनो और लेसोथो. ये देख लो, वैटिकन सिटी, पोप चचा यहां रहते हैं. क्लियर? इंटायरली सराउंडेड by another country, entirely surrounded by another country, completely. ठीक है. अब एक आपको पिक्चर याद होगी, इंग्लिश में पिक्चर आई थी इंसेप्शन. हिंदी में उसका था सपनुआ में सपनुआ, कि सपने में सपना, सपने में सपने में सपना, और सपने में सजना. ऐसे नहीं होएगा, सपने में पढ़ाई. ठीक है? क्लियर? अंडरस्टूड दिस? सो व्हाट इफ कंट्री ए इनसाइड कंट्री बी इनसाइड कंट्री ए? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. 100% पॉसिबल है. दीज आर कॉल्ड मल्टीपल ऑर्डर ऑनक्लेव्स. ये देखो, मल्टीपल ऑर्डर ऑनक्लेव्स. दुनिया में 3 ही एग्जाम्पल थे, अब 2 ही हैं, बिकॉज ये जो हमारा इंडिया बांग्लादेश का है, ये हमने सॉल्व कर दिया है. सो अ पार्ट ऑफ यूएई completely surrounded by Oman, completely surrounded by UAE. यहां तक तो तब भी ठीक था. What about country A surrounded by country B, surrounded by country A, surrounded by country B? ये पूरी दुनिया में, ये पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक बार होता था और सिर्फ एक जगह होता था. Used to happen only and only in one place, India and Bangladesh. These are called multiple order enclaves. कि India surrounded by Bangladesh, surrounded by India, surrounded by Bangladesh, part of India. तभी तो हमने, आपने पढ़ा होगा, 3 बीघा कॉरिडोर बनाया था ताकि यू कुड एंटर द इनर मोस्ट इंडियन टेरिटरी. ठीक है? और ये जरूरी नहीं है दैट दिस इज समथिंग विच इज अ बैड आइडिया. जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ खराब ही हो रहा है. जरूरी नहीं है. डिपेंड्स ऑन व्हाट कंट्रीज वी आर टॉकिंग अबाउट. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम. सी, नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम हैव द बेस्ट डील एवर. दे आर अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, which means they're a part of a common political organization.
They are a part of the European Economic Area, which means free movement of man and material. They are also a part of the Eurozone, which means you have a similar currency called Euro. You have a similar currency called Euro. ये लोगों को नहीं पता होता, लोगों को लगता है कि EU मतलब यूरो, नहीं. Eurozone, European Economic Area and European Union are three very different things. Britain was a part of the European Union, was not a part of the Eurozone, which is why Britain had its own currency called the British Sterling Pound. ठीक है? देखो इतना बुरा हाल नहीं है, हमको जितना बुरा लग रहा है इतना बुरा हाल है नहीं. ये देखो, These are real photos. ये नेदरलैंड्स की बाउंड्री है, ये बेल्जियम की बाउंड्री है. सुपरमार्केट आधा नेदरलैंड्स में, आधा बेल्जियम में. तो ब्रेड अंडा तो नेदरलैंड से खरीदना, आटा चावल बेल्जियम से. ये गाड़ी की पार्किंग देखो, 2 चक्का नेदरलैंड्स में, 2 चक्का बेल्जियम में. These are real possibilities. किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है. एंड देन लुक एट द बेस्ट एग्जाम्पल. ये घर देख लो, ठीक है? आधा घर बेल्जियम में, आधा घर नेदरलैंड्स में. जहां पे भी आपका घर का दरवाजा है, दैट इज द नेशनैलिटी ऑफ द हाउस. अगर आपको दूसरा कंट्री में माइग्रेट करना है, 2 गुना लगान लेना है, तो आगे का दरवाजा बंद कर देना, पिच्चू के दरवाजे से आ जाना, तो वो नेदरलैंड्स बन जाएगा. ठीक है? तो आप जब भी ब्रेकफास्ट खाने के बाद बाथरूम जाएंगे तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे. ठीक है? तो टेरिटरी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ठीक है? ये देखो इंडिया और बांग्लादेश की हालत, ये है हमारी हालत, और इसी को हमने सुधारा है. इंडियन टेरिटरी इनसाइड बांग्लादेशी टेरिटरी, inside Indian territory, inside बांग्लादेशी टेरिटरी. वो बेचारे जो इंडियन रह रहे हैं, इनको कहाँ कुछ मिल रहा होगा? कौन सा आधार कार्ड, कौन सा राइट टू एजुकेशन, कौन सा MG नरेगा, क्या मिल रहा होगा? और ये कौन से इंडियन है, काय की इंडियन है? They've been living in Bangladeshi surroundings. They would have had very similar cultures. उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस वैसे ही होंगे. जस्ट बिकॉज आपके पास आपकी आइलैंड है, जस्ट बिकॉज आपके पास ऐसा कुछ है, आपके पास एक छोटी सी टेरिटरी, डजंट मीन दैट योर बिलोंगिंग. आपका इंडिया से क्या लेना देना? आप लोगों से पूछिए. विच इज व्हाई इन 1970s आफ्टर द लिबरेशन वॉर, इंडिया एंड बांग्लादेश हैड अ ट्रीटी कि हम लोगों से पूछेंगे कि भाई आपको इंडिया में रहना है या बांग्लादेश में रहना है. जो बोलेंगे इंडिया में रहना, उनको इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे. जिनको बांग्लादेश में रहना, बांग्लादेशी सिटीजनशिप दे देंगे. और इसलिए वी हैड टू सॉल्व दिस इशू. ओके, अंडरस्टूड. एंड कंपेयर इंडिया एंड बांग्लादेश टू नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम. देखो फर्क देख लो. जस्ट सी द डिफरेंसेस. ओपन बॉर्डर्स, यहां पे BSF के जवान होते, गोली मार देंगे. Cooperative governments. India and Bangladesh have never always had cooperative governments, especially after the CAA. And if we start implementing the CAA, it is going to have a lot of issues to Bangladesh. Then utilities, जो हम enclaves को देते हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है, आल दाटा चावल. यहाँ कुछ नहीं है. Same currencies, यहाँ अलग अलग है. And borders are very clearly marked, Netherlands and Belgium. Indo-Bangladesh borders are marshy, which is why in the history of India, a country which is so obsessed with land, we gave 111 enclaves to Bangladesh and we only got 51 back. हमने कहा रख लो, क्योंकि उस लैंड का क्या करोगे जहां लोग नहीं रहते हैं या लोग आपके नहीं है. दिस वॉज नॉट जस्ट अ लीगल डिसीजन, बट दिस वॉज एन एथिकल डिसीजन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ
greater good, utilitarianism, कि whatever is in the best interest of most people, that should be done. And this is why the land boundary agreement between India and Bangladesh required a constitutional amendment, because enclaves and adverse possessions both required some form of ceding, hence constitutional amendment. ठीक है? Clear? So this is the larger story, this is the larger study of the land boundary agreement. ठीक है? Now we must understand the second part, Indian case study, जो हमने अपने स्टेट्स रीऑर्गेनाइज करे, कैसे करे, क्यों करे, कैसे करना चाहिए था, सही किया या नहीं किया. The second part of our layer 2 of our territory, which is topic number 2 of theme 2, internal changes, right? Reorganization of states. हमने जैसे बनाया, ठीक बनाया, गलत बनाया. Let's have a simple understanding of it. Why did we do what we did? ठीक है, चलिए, ये बेसिक्स मैं करा चुका हूँ, शुरू करते हैं. See, when India became independent, we had more than 500 princely states. ऐसे घूमर करके सब घूम रहे थे, ठीक है, which were then merged to form 27 states. आज we have 28 states and 8 union territories. When we had just become independent, we had to give in to their political considerations. निजाम ऑफ हैदराबाद ने जो बोला हमने वो किया, नहीं करते तो फंसते, राइट? सो लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन, सब कुछ जो था हमको, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, सब जो कर सकते थे हमने किया. बट इंडिया वॉज एन एक्सट्रीमली डाइवर्स कंट्री. इंडिया इज स्टिल टुडे. पीपल वॉन्टेड देयर ओन स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर ओन लैंग्वेज. आप जब भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल दैट यू मेक फ्रेंड्स विद are people who speak the same language and come from the same region as you. Language is a very important identification factor. And if you don't give people a state on the basis of their language, people are going to revolt. That is what people agreed to India's independence for. That we want something that we can call our own. And language was a very important criteria. So when we had become independent, we had become independent with the promise that we will soon become what is called a linguistically centered India. ये इंडिया था 1956 के पहले का, ऐसा दिखता था, ऐसा. आज में से आधी चीजें तो है ही नहीं. विंध्य प्रदेश, अजमेर मेवाड़, सौराष्ट्र, कच्छ आज ये गुजरात है, बॉम्बे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, मैसूर कर्नाटका है, विंध्य प्रदेश, भोपाल एक सेपरेट प्रिंसली था, पूरा नॉर्थ ईस्ट वॉज नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, पंजाब, हिमाचल, ऐसा दिखता था. और आज हमारा देश ऐसा दिखता है ना, ऐसा सुंदर सा देखो, ऐसा. तो दिस इज द जर्नी फ्रॉम 1956 टू 2021. क्या किया हमने, कैसे किया? सी, historically, India was divided into 3 kinds of territories. British conquered territories such as Bengal, princely legacies such as Jammu and Kashmir, Hyderabad, Awadh, Rajasthan, Bhopal, etc. And then, of course, presidencies. Presidencies were fully functional British administrative units. Bombay Presidency, Madras Presidency, which is why the Bombay and the Madras High Courts are the oldest high courts in the country. Allahabad वगैरह तो बहुत recently बने. The oldest high courts are the Madras and the Bombay High Courts, not the Delhi High Court, not the Allahabad High Court, but the older high courts. We had to reorganize all of them into India. ठीक है? अब खुद ही सोचो, this is a very good political agenda.
आप देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हो और आपको पॉलिटिकल पार्टी आके बोलती है कि भाई हम जब आज़ाद होंगे तो लैंग्वेज के हिसाब से देश को रीऑर्गेनाइज करेंगे. दैट इज अ ब्रिलियंट मोटिवेटिंग फैक्टर टू गेट पीपल इन्वॉल्व इन द नेशनल मूवमेंट. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट कांग्रेस डिड. In 1917, the Indian National Congress committed that we will, when we become independent and when we come to power, we will reorganize the state on a reorganize the country on a linguistic basis. In 1920, in the Nagpur session of the Congress decided that now our regional Congress headquarters are going to be based on linguistic zones. मराठी के लिए मराठी, गुजराती के लिए गुजराती, ऐसे. ठीक है, क्लियर ऑन दिस, अंडरस्टूड. In 1937, Nehru formally recognized that this makes great sense. But between 1937 to 1947, something happened. The partition of India. And the partition of India on communal grounds. Till today, in the history of the modern world, the world has seen 2 world wars, ostracization of the Jews, genocide in Africa, has seen the Arab Spring, has seen civil wars in South America. But the largest movement, the largest recorded movement of human beings across borders is the Indo-Pakistan partition till date. जितने जूज नहीं गए होंगे उतने ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के बीच में लोग गए हैं. इट इज द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड मूवमेंट इन ग्लोबल हिस्ट्री. सो ऑब्वियसली द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द कंट्री वाज वेरी वरीड कि आज धर्म पे लड़ रहे हैं, कल लैंग्वेज पे लड़ेंगे. तो अभी समय नहीं है. वी विल हैव टू पोस्टपोन दिस. दे कन्विंस्ड गांधी एंड देन everybody agreed that let us just become independent. Then in some time, once the situation of the country is okay, once everything is stable, we will then look at reorganization of states. ठीक है. Now ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत सोच है और ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि लोगों को लगता है कि ये देश लिंग्विस्टिकली रीऑर्गेनाइज्ड है. ऐसा नहीं है. लैंग्वेज इज अ क्राइटेरिया बट इट इज नेवर द ओनली क्राइटेरिया. Understood. For example, Andhra Pradesh, Orissa, these are all linguistically divided states. But Mizoram, Manipur, Tripura, they're for cultural factors, on tribal reasons. Jharkhand is Jharkhand because of the domination of the tribal belt, because of subsidiary cultures. India's only state which is divided on the basis of religion is Punjab. It's not because of language, it's because of religion. Sikhism is a dominant religion in Punjab. It is the only state in the country which was carved out on the basis of religion. Very recently, when Andhra Pradesh got divided into Andhra Pradesh and Telangana, that was not because of language. It was because of administration. It was very easy to administer it. And most recently, when Jammu and Kashmir, the only state in the country to have been demoted from a state to a union territory. बाकी सबका प्रमोशन होता है कि पहले यूनियन टेरिटरी थे अब स्टेट बन गए. गोवा यूनियन टेरिटरी था अब स्टेट बन गए, ज्यादा पावर आ गई. जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली स्टेट which has been demoted from a state to a union territory, which obviously means there are lesser powers. And the grounds that were given were security issues. उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड क्यों बनाया? क्या फर्क है? Because of the geographical factors. Hilly terrain, hill administration is completely different from plain administration. Right? Goa or Pondicherry why are they kept as separate units? Why is Goa a separate state? Because of their colonial origins. Pondicherry is French and Goa is Portuguese. तभी आपको वहां पे पोर्चुगीज और फ्रेंच आर्किटेक्चर बहुत दिखता है. तो ये कहना गलत है that this country has been divided only on linguistic grounds. There are several other reasons. अब ये आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? Because in 2021
one of the members of the Niti Aayog and a foremost economist, Vivek Debroy, said we must reorganize our states entirely because modern day requires to do so. हमें अपना पूरा देश का कच्चा चिट्टा बदलना चाहिए. We should completely reorganize our states. That is why we are talking about it. ठीक है. अब ये हुआ कैसे? देखो, जब मेंस में एग्जाम में आएगा तो बस इतना ही फ्लो चार्ट बना के छोड़ देना और एक एक लाइन लिखना कि धर कमीशन, जेवीपी और फैज अली में क्या कहा था. इसमें ज्यादा कहानी में जाने की जरूरत नहीं. कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, याद करके किसी का भला नहीं होता है. जस्ट two lines on what this was. So we've understood that India became independent in 1947. In 1952, we had our first ever elections. So in between 1947 to 52, the Constituent Assembly functioned as the interim parliament. The Constituent Assembly functioned as the interim parliament. ठीक है. प्रॉपर इलेक्शंस खत्म हुए 1952 में. वी हैड आवर फर्स्ट एवर इलेक्शंस. अब भाई हमने यहीं से कमिटी बनानी शुरू कर दी थी बिकॉज पीपल हैड अ वेरी क्लियर डिमांड. In fact, the first ever recorded protests in independent India has been the protests demanding linguistic states, कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाएं. और जब भी प्रोटेस्ट हो सरकार क्या करेगी? कमिटी बनाएगी. धर कमीशन, जेवीपी एंड फैज अली. धर इज नथिंग बट ही वॉज ए रिटायर्ड जज, जस्टिस एस.के. धर. जेवीपी इज ब्रह्मा विष्णु महेश, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पैतरमी सिरलमुल्लू, चित्रमैया. एंड फैज अली की दोनों की बकवास अब थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए. दिस इज हाउ इट वॉज डन. ठीक है. सो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में क्या लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सो आई जस्ट गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट. एग्जाम में क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ. So Rajendra Prasad, the president of the Constituent Assembly, in 1948 itself, that was also the interim parliament, set up the first Linguistic Provinces Commission under the leadership of Justice Dhar. अब सरकारी कमेटी सरकारी बात करेगी. बोला क्या लैंग्वेज? यहाँ देश जल रहा है, तुमको लैंग्वेज की पड़ी है. We will look at geography, we will look at finances, we will look at administration. This is a classic case of productivity or practicality वर्सेस इमोशनैलिटी. प्रैक्टिकल है कि जो जोग्राफिकली वाइबल है, फाइनेंशियली वाइबल है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आसान है, देश वैसे बनाओ. लैंग्वेज तो बहुत बात की बात है. जब गवर्नेंस ही नहीं रहेगा तो लैंग्वेज का क्या कर लोगे? वेरी क्लियर कट डायरेक्शंस. एंड दिस लेड टू मैसिव प्रोटेस्ट्स इन द कंट्री. मैसिव प्रोटेस्ट्स. ठीक है. And especially in the southern part of the country, because in the northern part, Hindi is a common language across most northern states. Southern part, that's not the case. तो फिर उन्होंने कहा कि बड़े लोग को लाते. तो बड़े लोग को लाए. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी, सिद्धरमैया. उसी साल 1948 में कमेटी बना दी. उन्होंने तो और टांग कस दी. कहा कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं, सिक्योरिटी, यूनिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यही तीन चीजों पे हम करेंगे. एंड इससे बवाल हो गया. ओरिजिनल अन्ना हजारे, ए साउथ इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पोत्ती श्रीरामल्लू, ही डाइड बिकॉज ऑफ फास्ट hunger unto death fast. And this led to a massive movement spread all across the country. And Andhra Pradesh was the first state that they agreed to create on linguistic grounds. That is why, if you notice, when I showed you the map of 1956, if you notice very carefully, Andhra Pradesh is the only linguistically organized state. Because of that protest. ठीक है, तो अब बवाल बहुत हो चुका था. So now they wanted a neutral commission, so they had a फैज अली commission. फैज अली ने कहा जितना दिमाग में आता है सब डाल दो.
कि लैंग्वेज भी होगा, कल्चर भी होगा, यूनिटी भी होगा, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी होगा, वेलफेयर भी होगा, एंड ऑल ऑफ सब कुछ मिला देते हैं, ठीक है। इन 1953 his commission was formed and gave the report by 1955 end of 56. उसने कहा कि एक काम करते हैं कि देश को हम 16 स्टेट्स, उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी तो हमने नाम दिया है, 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज में डिवाइड करते हैं। 16 states and 3 centrally administered areas. I'll give you an example of what a centrally administered area is. ठीक है, give you an example. China सुना है ना, correct? So China has a concept called one nation, two systems. One nation, two systems. मतलब there is something called People's Republic of China. This is called mainland China. This is called mainland China, है ना, People's Republic of China. और चाइना की यूनियन टेरिटरीज, there are 2 centrally administered territories in China. One is called Hong Kong and the second is called Macau. Hong Kong is a previous UK British colony and Macau I think was a Portuguese or a French colony, I'm not sure. And Hong Kong today is one of the leading financial epicenters of the world, and Macau is called the Las Vegas of the East. It has more casinos than Las Vegas. It's a tourist destination. Interesting बात ये है कि they had promised Hong Kong and Macau कि आपको बाद में इंडिपेंडेंस दे देंगे, दिया नहीं. फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, बाकी सब कुछ ये अपना अपना करते हैं. इनफैक्ट जब हांगकांग वाले चाइना जाते हैं तो उनके वीज़ा पे भी स्टैंप लगता है. जब चाइना वाले हांगकांग आते हैं उनके वीज़ा में स्टैंप लगता है. जब हांगकांग वाले मकाऊ जाते हैं तो वीज़ा पे स्टैंप लगता है. मकाऊ वाले जब चाइना जाते हैं तो उस पर स्टैंप लगता है. When you are traveling, either you get a Chinese visa or you get a visa to Macau or you get a visa to Hong Kong. ये तीनों अलग अलग वीजा इश्यूज होते हैं. चाइना का पार्ट है लेकिन नहीं है. That is the concept of centrally administered territories. ठीक है. So that is what they said. गवर्नमेंट ने रेकमेंड करा कि नहीं, हम अपना दिमाग लगाएंगे, हम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज नहीं बोलेंगे, हम यूनियन टेरिटरीज बोलेंगे. सो इन 1956 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे क्रिएट हो. ये था 1956 का इंडिया. ठीक है, जिसको आप लक्षद्वीप कहते, तब उस टाइम पे लैकेडिव, मिनिकॉय, अमिंडवी आइलैंड्स होते थे. हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसको हमने पहले स्टेट बनाया था. ठीक है, कुछ इधर से इधर गए, कुछ उधर से इधर आए. इधर से इधर जाने वाले एक ही हैं, जम्मू एंड कश्मीर, बाकी सब इधर आए. हिमाचल इज अ स्टेट, मणिपुर इज अ फुल स्टेट, त्रिपुरा इज अ फुल स्टेट. ठीक है, और बस आई रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस, अगर होलसेल में करो तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दिस इज एन इंटरनल चेंज, is not going to be called a constitutional amendment, will change schedule 1 but will not be called a constitutional amendment. होलसेल में करो तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फिर एक एक स्टेट का करो तो नाम जोड़ लेना. मैंने क्या बताया था आपको, शेड्यूल 1 में 2 चीजें हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम और उसका एरिया. तो जब भी नाम या एरिया चेंज करोगे तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश फर्स्ट बिकेम उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल, फिर उत्तरांचल को रीनेम करा था उत्तराखंड. ठीक है, तो कहानी यही है. रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, देन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 60, केरला, नागालैंड, हरियाणा, मैसूर, हिमाचल became the first union territory to become a state. Then Manipur and Tripura were made states. ये सब चलता रहा, right? We'll do Sikkim and center-state relations later. मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल. आप देखेंगे मोस्ट ऑफ 70s and 80s इज फॉर द अर्ली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. फिर लेट 80s
गोवा, उसके बाद रिसेंट। मध्य प्रदेश गॉट डिवाइडेड इनटू मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इनटू उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल, इसको फिर 2006 में रीनेम करा एज उत्तर प्रदेश। बिहार इनटू बिहार एंड झारखंड इन 2000। आंध्र प्रदेश इनटू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड वेरी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरी। और मैंने कल आपको समझाया था, आई रिमेंबर आई टोल्ड यू कि ये जेएनके किया कैसे, ठीक है। रिमेंबर आई टोल्ड यू आर्टिकल 370 gave a special status, a special power to JNK। वो क्या स्पेशल पावर थी कि बिना JNK से पूछे कोई भी कानून JNK पे नहीं लगा सकते। बिना JNK से पूछे नो पार्लियामेंट्री लॉ कैन बी अप्लाइड टू JNK विदाउट कंसेंट। बहुत सिंपल था ये पावर 370 में है। ये भी लिखा हुआ है that this power is a temporary power and this power can be lifted if JNK agrees। अगर JNK बोले कि मुझे ये स्पेशल पावर नहीं चाहिए तो ये हट सकता है, ठीक है। JNK में कौन? द JNK लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, तो ठीक है। मोदी जी ने कहा 2019 में JNK असेंबली से पूछ लो कि स्पेशल पावर चाहिए कि नहीं। तो हम गए JNK, पता चला JNK में तो प्रेसिडेंट्स रूल है, असेंबली तो है ही नहीं। तो जब प्रेसिडेंट्स रूल होता है देन हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट? द गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द सेंटर। तो हमने सीधा गवर्नर से पूछा कि ये भाई हटा लें क्या? गवर्नर ने कहा साहब आप नहीं तो रखा है, पूछने की क्या बात है। सो दे रिमूव द स्पेशल स्टेटस, JNK became like any other state, and with a simple law they converted JNK into union territory and law with legislature as JNK and union territory without legislature as Ladakh। लीगली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगली इट इज परफेक्ट। मॉरली आई डोंट नो, ये सवाल तो है। क्लियर ऑन दिस? दैट इज व्हाई यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल इन योर एथिक्स क्वेश्चंस ऑन एंड्स, ऑन मीन्स वर्सेस एंड्स, ठीक है, ऑन मीन्स वर्सेस एंड्स। तो ये कहानी है रीऑर्गेनाइजेशन की। आज के टाइम पे बहुत सारे स्टेट्स चाह रहे हैं, बहुत सारे एरियाज चाह रहे हैं हमको स्टेट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल विदर्भा इन महाराष्ट्र, वेरी वेल नोन अनफॉर्चुनेटली फॉर फार्मर सुसाइड्स। दिल्ली बोल रहा है हमको पूरा स्टेट बनाओ। गोरखालैंड इन द ईस्ट, हरित प्रदेश पूर्वांचल, सेंटर एंड यूपी। नाउ लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ, we'll do this in center state in detail, but Delhi and Delhi statehood कि ये इशू क्या है, इसको हम टेक्निकली बहुत डिटेल में करेंगे। सी बेसिकली सेंटर हैज द मोस्ट पावर्स, देन द स्टेट्स हैव पावर्स, एंड देन यूनियन टेरिटरीज हैव पावर्स। यूनियन टेरिटरीज आर ऑफ टू टाइप्स, विद लेजिस्लेचर्स एंड विदाउट लेजिस्लेचर्स। विदाउट लेजिस्लेचर्स तो बात ही खत्म हो गई, बिकॉज विदाउट लेजिस्लेचर्स आर गवर्न्ड बाय द सेंटर, ठीक है। बट यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर्स देयर आर 3: Delhi, Pondicherry and JNK। Amongst all of the 3, Delhi has the least amount of powers. JNK and Pondicherry have equal powers, then Delhi। Delhi के पास 3 चीजों की पावर नहीं है: लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। ये तीनों पावर्स सेंटर के पास है, विच इज वाई दिल्ली पुलिस इज एक्चुअली अंडर द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिल्ली कहता है कि मेरे को ये सारी पावर्स दे दो, मेक मी अ फुल स्टेट, मुझे प्रॉपर पूरा स्टेट बना दो।
दिल्ली इज लाइक एवरीथिंग एल्स, बस ये 3 चीजों पे कानून नहीं बना सकते। दिल्ली में सीएम है, सीएम है। दिल्ली में एमएलए है, एमएलए है। दिल्ली में डिप्टी सीएम है, बिल्कुल हो सकता है। दिल्ली में मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं। पर दिल्ली इन 3 चीजों पे कानून नहीं बना सकता। नाउ should Delhi be made a full state? In my opinion, the answer is no. And this is the opinion that you will write in the exam also. Please understand why. Because of multiple reasons. And we'll cover them in detail later. Pehla, Delhi is not just Delhi. Delhi is also the capital of India. ठीक है? आप इसको वॉशिंगटन डीसी से कंपेयर करो। वॉशिंगटन डीसी, सबको पता है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी इज लाइक दिल्ली फॉर यूएस, बट वॉशिंगटन डीसी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूएस की बिल्डिंग्स हैं वो 10 किलोमीटर के रेडियस में है। उसको आप कैपिटल हिल कहते हो। सब कुछ 10 किलोमीटर में। दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में आधी बिल्डिंग सेंट्रल दिल्ली में है, कुछ एम्बसीज चाणक्यपुरी में है, अब द्वारका में आने वाली हैं, कुछ वसंत विहार में है, कुछ मिनिस्ट्रीज वसंत कुंज में है, कुछ मुनीरका में है, ऑल ओवर दिल्ली। So it is a massive security concern because Delhi, unlike Washington DC, is spread over. Washington DC में ठीक है आप उसको छोटा बना के सारी पावर दे दो, लेकिन दिल्ली ऐसा है ही नहीं। There are VIP movements, there are security protocols. अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर हो जाए and Prime Minister has to travel and peripheral security has to be given by Delhi police, और दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर ही नहीं है, कोई दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आ रहा है, तो आपकी आधी जिंदगी तो कोऑर्डिनेशन में निकल जाएगी। और आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर को कितना बुरा लगता है अगर हाईवे पे गाड़ी फंस जाए तो, है ना? दिक्कत तो होती है, करेक्ट? तो यही इशू है, राइट? दैट इज समथिंग वी मस्ट नो। सो दैट इज एन इशू। दैट्स द फर्स्ट रीजन। सेकंड, most of your welfare functions are with Delhi anyway. Education, labor, health, sanitation, water, उसमें किसने रोका है? वहां जो करना है करो। The only things you don't have are land, law and order and police. उसकी वजह से स्टेटहुड कहां से रीजन बन गया? एंड क्या गारंटी कि इसके बाद से सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी? आप कहते हो दिल्ली में विमेन आर नॉट सेफ। आई एग्री, विमेन आर नॉट सेफ इन दिल्ली, बट दिल्ली पुलिस अगर होम मिनिस्ट्री के अंडर हो या दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर हो, उससे वो थानेदार का बिहेवियर तो नहीं बदलेगा ना, वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा। द लीडरशिप डजंट चेंज द बिहेवियर ऑफ द लोअर मैनेजमेंट। ओके, सो आई नो दिस इज एन ओपिनियन एंड दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज द ओपिनियन दैट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम, एंड वॉट एवर एग्जाम ओपिनियन दैट गेट्स यू मार्क्स इन द एग्जाम इज वॉट इज द राइट ओपिनियन। फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते पढ़ाते आई एम सस्पेंडिंग योर फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन। अब वही लिखोगे जो मैं बोलूंगा, क्योंकि उसके नंबर मिलते हैं, बाकी मेरे को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड दिस? आर वी क्लियर? सो देयर आर सम मेजर स्टेटहुड डिमांड्स। अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भाई उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, डज इट मेक सेंस टू बिगर स्टेट्स वर्सेस स्मॉल स्टेट्स? अब इसको आंसर्स लिखने के तरीके हैं। एक तो आप स्मॉल स्टेट्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखिए, बिग स्टेट्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखिए, आंसर कंक्लूड करिए। या फिर आप अपने आंसर को 3 थीम में डिवाइड करिए, रिप्रेजेंटेशन, गवर्नेंस एंड वेलफेयर। आर बिगर स्टेट्स और स्मॉलर स्टेट्स मोर रिप्रेजेंटेटिव, which are easier to govern, which will help you make the lives of the people better? उसके हिसाब से लिखिए। This is entirely up to you. However you want to write it, no problem at all. Okay? No problem at all. ठीक है? Now, so आप जैसे संदीप ने आज तक वाला सवाल पूछा है सौरभ ने कि सर स्टेटहुड ही क्यों दिया? क्योंकि तब भी दिल्ली में पॉपुलेशन इतनी है that you can't call it a union territory. करोड़ों से ज्यादा लोग रहते हैं, so you can't call it just a union territory. दिल्ली, पौंडीचेरी और JNK को हमने लेजिस्लेचर क्यों दिया? क्यों दादर एंड नगर एंड दमन दीव हवेली को नहीं दिया? बिकॉज वहां इतने लोग हैं ही नहीं। 10 लोग हैं और 10 लोगों में तुम लेजिस्लेचर बना दोगे, 10 में से 5 MLA होंगे, 5 में से 1 CM होगा, क्या फायदा?
वो तो वही बात होगी ना पुराने कॉलेजेस में कि कॉलेज में 10 लोग पढ़ते हैं, 10 लोग ऑर्गेनाइज करते हैं फेस्ट, 10 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, 10 ही जीत के जाते हैं. So you have to have enough people. You have to have enough people for you to be able to give them the legislative status. Okay. So what are the advantages of small states? Always remember, smaller states, local issues will be closer to home. Better for focused governance and bureaucracy, decentralization of power, better management and allocation of public resources, more sort of prominence given to smaller groups, less monopolistic tendencies, better representations for minorities. वो तो है ही है, it'll always be better. ठीक है, but there are some disadvantages also. Disadvantages है भाई, सब में पैसा लगता है, and for that you'll have to be dependent on the states. And second, since India is primarily an agrarian economy, by dividing a country, by dividing us into smaller states, what is the guarantee that agriculture is going to improve? The primary occupation of the country is going to improve, right? Third, let us not forget that rivers are interstate in nature. More number of the states, more are the number of river water disputes, right? More are the number of river water disputes, right? And of course, newer political parties have also come up, leading to more disputes, dividing people. जहाँ politics होगी, जहाँ representation होगा, वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, आपको कहीं ना कहीं you will always see some form of division. Some form of division. Okay? No, Shivam, that is not why it is. Don't oversimplify it unnecessarily. ठीक है? So these are the advantages and disadvantages of big states versus small states. Now when we look at the larger states, there are some advantages. More states, more number of seats to the Lok Sabha, more number of seats to the Rajya Sabha, more MLAs will always be an important ingredient. बिना यूपी में इलेक्शन विक्ट्री के आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार नहीं बना सकते. 80 MP हैं यूपी से, बहुत बड़ा नंबर होता है वो. बट the bigger you are, the more administratively inconvenient it is. The more conflicts and management of interest issues are there. There is greater diversity, so there is always going to be greater aberration. Resources allocation is going to be a problem. The physical distance, अब लखनऊ एक तरफ है और कहाँ ईस्टर्न यूपी, कहाँ वेस्टर्न यूपी, कहाँ जा पाओगे? How will be able to manage the geographical breadth, right? And that is why it becomes very easy to divide and rule as larger states. And to understand this better, you must also look at the curious case of Telangana. Telangana and Andhra Pradesh are a success story. Okay? Now, historically, Andhra Pradesh was a part of the Madras Presidency and Telangana had a feudal history. Okay? So obviously education, because they were under British administration, was so much better, right? Of course, Raksham, नाम बदलोगे तो नहीं आएगा क्या? Right? So therefore, the social development in Andhra Pradesh was far better than the social development in let us say Telangana. ठीक है? Geographically, Andhra Pradesh was a coastal state. You had therefore more business, more trade. But Telangana was also rich in river and river basin minerals. See, economically, Andhra was always stronger. They were more enterprising. आपकी first ever offshore office of Google was actually made in Hyderabad. The first ever international office of Google was in Hyderabad. IT boom actually started from Hyderabad, not from Bangalore, right? And that is where Andhra became what it is. Telangana, unfortunately and interestingly also, did not grow in agriculture as much as it should have. And there are also cultural differences. The region of Telangana has always been under the Qutub Shahi rule historically. So you will see a lot of North Indian influences and different set of festivals. So
We decided to do this. Telangana movement intensified in the 70s, then died down in the 2000s for political opportunistic reasons. In 2014, Telangana was created out of Andhra Pradesh. This reorganized it. Today we are looking at 2 or 3 capitals. उनको जो बनाने बनाओ, हमको क्या लेना देना. The number of capitals you create has nothing to do with the constitution. Nothing at all. तुमको नए डिस्ट्रिक्ट बनाने, nothing to do with the constitution. नए कैपिटल बनाने, कैपिटल का नाम बदलना है, nothing to do with the constitution. Name of the state, name of the union territory, and area of the state and area of the union territory. These are the only 4 things which are mentioned in the constitution. Okay? And was this reorganization successful? Absolutely. आप नीति आयोग का डेटा देख लो. Both of them are doing so well in industry, in water, in sanitation, in sustainability, energy. And that is the reason. तो फिर आपका conclusion क्या हुआ? Conclusion ये हुआ कि बस always choose development over political considerations. And if you're dividing a state, give adequate composition and compensation to the parent states. Make sure there are predefined parameters to check these unfettered demands. Always predefined parameters. Always predefined parameters. ठीक है? And the fundamental problems of these development and all of these, जो आपका करप्शन से रिलेटेड इशू है, इनएफिशिएंसी से रिलेटेड इशू है, कुछ भी है, उसको पहले सॉल्व करो. That is the most important to be solved. That is the priority. And your conclusion should always and always be that, boss, it is always better to have development or decentralization over religion, language, caste और डायलेक्ट. बस रीऑर्गेनाइजेशन में इसके ऊपर कुछ नहीं है. प्रीवियस ईयर में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बिग स्टेट्स वर्सेस स्मॉल स्टेट्स. मैंने करंट कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए इन द मेंस फोल्डर I have given you a single 2-page PDF on the need for the second reorganization commission, और ये हमें क्यों करना चाहिए और ये हमें क्यों नहीं करना चाहिए. ठीक है? Understood this? ये देख लीजिए. Probable question, current affairs context, क्यों होना चाहिए, constitutional provisions क्या हैं, क्यों there are so many reasons for why is there a rise in demand for states, क्यों हमें एक better commission की ज़रूरत है, क्या problems आ सकती हैं, and what is your way forward. मैंने एक जगह लिख के दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई problem नहीं है. ठीक है? And this completes theme number 2, which is this completes topic number 2 of theme number 2, which is territory. Okay? All right. Okay? Done? Sorted? ठीक है. So you can now take a 5-minute break and then we will start with theme, finish the last topic in theme number 2. The last topic, which is citizenship. All right. Please take a 5-minute break.
Now, let us start with topic number 3. Let us start with topic number 3 of theme number 2, which is citizenship. And this also has to be done with absolute caution and with absolute discretion, because only a very limited amount of this is actually important as far as the exam is concerned. So you have to pay a simple and a lot of attention to this. Okay, so let us start. We are first going to outline what is our layer 1 and layer 2 as far as citizenship is concerned, right? So layer 1, which is conceptual and factual in nature, and therefore is important for the prelims exam, and layer 2, which is mostly analytical in nature and therefore is important for the mains exam. Okay, is important for the mains exam. So let us see what we are referring to. Okay, first let's understand this as clearly as possible. Like territory, we are going to understand the concepts and the dimensions of citizenship. We are then going to understand the principles of citizenship. Then we are going to understand how to become an Indian citizen. And how to lose Indian citizenship. How to lose Indian citizenship. We will apply how to become an Indian citizen, and we will understand a case study. The case study is of the Citizenship Amendment Act of 2019. Okay, so these are the things that we have to cover. Please understand, as far as the exam is concerned, the complicated dates and some complicated timelines are absolutely not in your syllabus, and please be very, very strict about only covering citizenship to the extent of how much we cover it as far as the exam is concerned. All right, so let us start and let us understand first the concepts and the notion or the dimensions of citizenship, and we'll understand this in an application based format. So when we understand the dimensions or when we understand the concepts of citizenship, we will understand that we are going to be using a political dimension, a geographical dimension, and an economic dimension. And this economic dimension will also have a welfare concept. Okay, we'll have a welfare concept. So let's understand this from the point of view of India. Now, let us say we're talking about the types of people in India. We are talking about the types of people in India. There are broadly going to be two types of people in India. You are either going to be a citizen or you're going to be a non-citizen. Now, the words non-citizen or foreigner or alien
This does not mean extraterrestrial life, but alien is also a term that we use for non-citizens, right? These are interchangeable terms. So you're either a citizen or not. Now you must also understand that, like in the case of nation versus state versus country, as general studies students, nation, state, country are interchangeable. In the same way, citizenship and nationality, as far as general studies is concerned, is interchangeable. Okay? If you are a political science or a sociology or a law optional student, it could perhaps mean different things. But as far as you and I are concerned, this is enough. This is what is needed. We don't have to worry about anything else. Okay? Now, this difference between a citizen and a non-citizen is a political difference, right? Is a political difference. Now you must understand ends versus means here. The first thing that you must understand about India is that the end matters. As long as you are a citizen of India, doesn't matter how you became an Indian citizen, all citizens, irrespective of the way they become an Indian citizen, are absolutely equal. They have the exact same amount of powers and privileges. This is not the case in the US. You have different classes of citizens in the US. For example, if you migrated to the US and you were given citizenship later, you cannot contest for presidency of the US. Only those people who are citizens of the US by birth are capable of contesting elections to the US presidency. That's the first thing. The second is, what are the political advantages? Of course, citizens have the right to vote. They also have the right to contest elections. And they also have the right to hold public office. Now, this public office can be an elected office or it can also be an appointed office, but you have to be a citizen to do so. So the first dimension to citizenship is this. Okay? The first dimension to citizenship is this, right? The fact that you are a politically differentiated individual. Alright? Now, once we understand this, then we understand the further classification. And the further classification is based on geography. This is on the basis of residency, right? Which means you're either an Indian citizen residing in India or you're an Indian citizen not residing in India. So this means you are a resident Indian or you are a non-resident Indian. This is popularly called NRIs also, right? And in general terms, this is for a period of 6 months in one financial year. So if you are living in India ordinarily for more than 6 months, then you are a resident Indian. If you are not living in India for more than 6 months in a year, it does not mean continuously. Just not living in India for more than 6 months in a year, then you are a non-resident Indian. This geographical dimension then leads to an economic difference.
The basic economic difference is resident Indian pay local taxes, income tax, etc., right? Because आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैक्स दीजिए. But if you're not living in India for more than 6 months in a year, then you don't, for example, pay income taxes. You don't pay income taxes. As it is, one of the most difficult kinds of property to acquire is agricultural property. Non-resident Indians have higher restrictions on agricultural property. Now you must understand why. Because agricultural property is usually available at very cheap rates. And you need to have an agricultural background to acquire agricultural property. जब इस देश ही में नहीं रह रहे हो तो agricultural property लेके क्या करोगे? Your objective of getting agricultural property is that you can hike up prices, which can be disadvantaged to the interests of the poor farmers who have to work on the fields. So that is why. So that is the primary difference. And this geographical difference, therefore, leads to what is called an economic dimension. Okay. And then we have a regional component to this, wherein we have the word domicile. Okay. Now domicile means two things. First, domicile of India, which is the same thing as citizen of India, and you can be a domicile of any one state. You can be a domicile of any one state. And every state has their own rules for domicile, have their own prescriptions for domicile, for their own rules of whether you are, how can you become a domicile of a state or not. And domicile is a welfare dimension, right? For example, several state schemes, domicile has a preferential allotment. University admissions are often on the basis of some state universities will have quotas for students or a domicile of that state, and so on and so forth. So we understand there is something called a citizen, there is something called a resident, and there is something called a domicile. These are our three very simple variables. And if you do a simple permutation combination, you'll understand how this works. So you have a citizen, a resident, and a domicile. Okay. Now let us see the kind of possibilities and the kind of permutations that can exist. The first is, for example, most of you are citizens of India, you are obviously residents of India because you are mostly in India, and most of you will be eligible to become a domicile of a state, or you may have a certificate of a domicile of a specific state that you may come from, right? Most of you are here. I am not here. I am not this category. I am a citizen of India. I absolutely reside in India, but I am not the domicile of any state because I come from an army background. And because I come from an army background, I have changed more than, say, 7-8 schools, right? I've studied in 7-8 schools in 7-8 states. College was in a different state. Post-college, post-graduation was in a different country. So I don't have the domicile of any state. I'm a domicile-less resident of India. Children of parents who have transferable jobs will usually fall under this category. Okay? Then, what if I am living outside the country? So I am a citizen, I am not a resident, and I am also not a domicile, right? I am also not a domicile. Correct? What if one of you decides to go live outside the country? So you're a citizen, you're not living in India, but you still hold the domicile of a state. That is absolutely possible.
Fifth, let us say you are not a citizen. You can still be residing in India. That makes you a foreigner, right? And if you're not a citizen, you cannot be a domicile, right? That is also okay. That is also perfectly fine, right? Let us say you're residing in India, you're not a resident, you're residing in India, not a domicile. And let us say you're not a citizen, you are not residing in India, and therefore, if you're not a citizen, you cannot have a domicile. There are so many permutation and combinations that can be made out of this discussion, right? So this is largely how it is done. Okay, now let's look at the people who are not Indians and are living in India. The people who are not Indians who are living in India. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंसान खराब नहीं होता है, हालात इंसान को खराब बना देते हैं. There are basically two kinds of people who are actually living in India who are not Indian citizens. Who are not Indian citizens, and there are people who are living in India. People who here are legal migrants or legal residents. They're here with valid documentation. These valid documents are a valid passport and a valid visa. And there are people who are in India without a valid documentation, which means without a valid passport or a valid visa. Now you must understand this. Passports are an identification of citizenship, but passports are not the only identification of a citizenship. Passports are international identifications of citizenship. So if I have a passport, that definitely means that I'm an Indian citizen. But if I don't have an Indian passport, that does not mean I'm not an Indian citizen. If I have no plans to ever go out of the country, then there is no need for me to have an Indian passport. One must also know that passports are very expensive. The average cost of getting a new passport is at least about 3,000 to 4,000 rupees. Why would a poor person spend 4,000 rupees on a government document that the person is never ever going to use? Right? Passports are also one of the most universal forms of technology-enabled documentation. Okay? One of the most universal forms of technology-enabled documentation. I'll give you an example. Right? Just give me 1 second. For example, this is a debit or a credit card that I hold. The dimensions of this card are universally throughout the world the same. A debit or a credit card throughout the world will be of the exact same dimensions, exact same. Because it should be capable to be inserted into any machine, any form, anywhere in the world. Internationally uniform. Similarly, that's exactly how passports also function. Passports are of the exact same shape and the exact same size of any country throughout the world. Their color may change, their purpose may change, but they will always be the same. Like for example, most Commonwealth countries have a dark blue passport. Most Islamic countries have a green passport. Most of the European countries have a dark red passport. If you are representing India internationally, if you're traveling on central government business or state government, you're traveling on government business,
then you will be issued a white passport. That's an official passport. And if you're posted as an Indian in any other part of the world as a foreign services officer, then you will be what is called holding a diplomatic passport. UN officials, how India has a civil service, UN also has a civil service called the UN Civil Services. How we have Group A, Group B, Group C, Group D, UN also has P1, P2, P3, P4. There are entrance exams for this. Okay, India doesn't conduct those entrance exams. In India, I think in South Asia, the exams are conducted in Thailand or Hong Kong. I'm not very sure, right? The entry point to this is called the YPP, the Young Professionals Program. The UN also has lateral entry as well. So P1, P2, P3, P4, right? So if you are a part of the UN civil service, the administration of the UN, and you have to travel to any other country, then you are issued what is called a UN passport, which is of light blue color, which is of the same color of the flag of the UN. Okay, which is of the same color of the flag of the UN. So there is a lot that goes on. Okay, visas are permissions given by the receiving country to a citizen of the sending country for a specific purpose. Sometimes visas are embossed on passports. Sometimes they're given as emails nowadays. You have e-visas. And sometimes countries like China become very naughty and they staple Indian visas. They staple Chinese visas on residents of Arunachal Pradesh, because China says we don't think Arunachal Pradesh should be a part of India. They think Arunachal Pradesh should be a part of China, because they say we don't recognize the McMahon line as the international line of dispute, of boundary, and they find it to be disputed. Okay. So people who have a valid passport and a valid visa, great. People who don't, then they're not legal migrants. Okay. All right. Now you understand immigration and emigration. So immigration is when you are immigrating to another country. Emigrating is when you are coming from another country, right? So for example, if an Indian is going to live in Canada, then that Indian is migrating to Canada. In Canada, that Indian will be an immigrant, right? Will be an immigrant. You've migrated to Canada. But if, let's say, a Canadian is coming to India, the Canadian is emigrating to India. Okay. So that is how it is, right? The visas can be issued for a wide range of purposes: student visas, business visas, short-term business visas, long-term business visas, tourist visas. Sometimes you get dependent visas or spousal visas as well. So there are several different kinds of visas that people are able to, get for themselves, right? So this is something which is true. Now, let's look at how the documentation process and all of it works. Okay, so let us see. When we talk about people in India who have come with a valid passport and a valid visa, it depends from where you have come from, which country you have come from, and that can have a little bit of an impact. So there are basically two kinds of such people. They are either friendly aliens or they are enemy aliens. They are either friendly aliens or they are enemy aliens. Now, just because we say the word enemy does not mean that every Pakistani citizen living in India is an enemy alien. No. An enemy alien is somebody who specifically the Home Ministry or the Ministry of India, a Ministry of India has very specifically issued an order stating that citizens of the following countries who are legally living in India, they will be considered as enemy aliens till the time the order is in force. Right now, today, there is no citizen of any country which is considered as an enemy alien in India. Okay? Understood? That's the basic difference. Now,
The other part is people who are in India without a valid travel document. Remember, इंसान खराब नहीं होता है. Remember, इंसान खराब नहीं होता है, हालात इंसान को खराब बना देते हैं. राइट? इंसान खराब नहीं होता है, हालात इंसान को खराब बना देते हैं. Right? So let's understand this. There are two kinds of such people. One, people who are here, वो तड़ी पार है ना, they are simply called illegal migrants. तड़ी पार, बस आ गए बॉर्डर फान के. And then there are people who were forced to leave their country because of a fear of life, threat to family. उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, उनको अपना देश छोड़ के आना पड़ा. These are people who are called refugees. These are people who are called refugees. ठीक है? Now, let's spend some time on this term and understand what are we trying to say. ठीक है? So let's get this part right so that we understand what is it that we are trying to say. चलिए ध्यान से देखते हैं. There is something called an IDP, and internally displaced person. This is a person who's forced to leave a region in their own country Remember, forced to. This is extremely important. Forced to leave a region in their own country and move to another region in the same country. Move to another region in the same country. ठीक है? In the same country. ठीक है? Understood? Important. Okay. Good. मतलब अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. यूपी से महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र से कर्नाटका जा रहे हैं, विद इन द सेम रीजन. राइट हो गया, कुछ भी हो गया. A refugee is someone who is forced to leave their country and move to another country. जैसे रोहिंग्यास के केस में था. ठीक है? Move to another country. अब देखिए, this means it is going to be an international issue, and for this international issue we need an international document and we need an international organization. We have something called the Geneva Convention of 1951, which says every country should try and help out refugees, accept them as much as we can, right? And organization is the UN High Commission for Refugees. The UN High Commission for Refugees. ठीक है? UN High Commission for Refugees. Interestingly, India has not ratified the Refugee Convention. India has not ratified the Refugee Convention. We just haven't ratified it. We haven't ratified the Refugee Convention, which means India has no obligation. India has no obligation
whatsoever to accept any refugee whatsoever, which is why India could so blatantly deny what are called Rohingyas to India. ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, all right. So this is something broadly you should know about refugees. ठीक है, understood this? Yes, simple enough. Okay, now the most important discussion with amongst all of this is that we have to now figure out how do rights work in India, what is the basic explanation of who gets what rights and to what context. Okay, just give me a second. Okay, now let's look at rights. Let's try and figure out who gets what kind of rights. Do it on a fresh page. देखो, हम राइट्स के टेक्निकल डिटेल में बातें करेंगे बाद में, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द अवेलेबिलिटी ऑफ rights. The availability of rights. Now there are basically two kinds of fundamental rights. One, we're talking about fundamental rights obviously. One, negative rights, and two, positive rights. इसको ऐसे समझो, जब दिवाली में दो तरह की मिठाई आती है, दो तरह की मिठाई आती है, ठीक है. वन, उसको हम काजू कतली कहते हैं. टू, सोन पापड़ी कहते हैं. काजू कतली इज द सॉट आफ्टर मिठाई. हम सबको नहीं देते. अगर कोई काजू कतली आता है तो हम घर में अपने आप खा लेते, घर में अपने लोगों के लिए काजू कतली रखते हैं, राइट. और सोन पापड़ी हम जनता में बांटते हैं. सोन पापड़ी इज द एमजी नरेगा ऑफ मिठाई, बट काजू कतली इज द एफडीआई ऑफ मिठाई, राइट. सीधी सी बात है, इफ देयर इज अ फंडामेंटल राइट which is giving reservation, would you give it to everybody, or will you only want to give reservation to citizens of India? Obviously अपने लोगों का भला करेंगे. That is the basic difference between negative and positive rights. Negative rights are bare minimum rights, bare minimum, whereas positive rights are affirmative actions of the state. मतलब सरकार आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती है या आपको कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए सपोर्ट या प्रोटेक्ट करना चाहती है, ठीक है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से linguistic and cultural minorities. The government says you have the right to promote them and we will give you institutional and financial support. अरे अपने लोगों को देंगे ना, कि बाहर वाले आके बोलेंगे हाँ हमारा भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, हम फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच के लिए करो, चलो चलो. या हम डच बोलते हैं, डच नहीं, हम अपने देश की बात करेंगे ना, अपने देश के लोगों की बात करेंगे. सो दैट इज वाई. So for example, Article 14 is a negative right. And negative right is available to everybody. Everybody should be treated equally before the law. But Article 15 and 16, which give you reservation in education and employment, this will be available only and only to citizens. मतलब एक सिंपल तरीका है समझने का. एग्जाम में कोई नहीं पूछता कौन सी राइट सिटीजन के लिए, कौन सी राइट नहीं है.
अब एक चीज ध्यान रखना, वी स्पोक ऑफ समबडी कॉल्ड एनिमी एलियंस। हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है और पाकिस्तान के सिटीजन इंडिया में खुलेआम घूम रहे हैं। स्पाई भी हो सकते हैं, कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, बट लीगली रह रहे हैं इंडिया में। सो दे विल गेट ऑल नेगेटिव राइट्स एक्सेप्ट द राइट्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक्सेप्ट द राइट्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये 22 आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ है। दिस राइट इज नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस। ताकि अगर हमको लगे कि आप कुछ कांड करने वाले तो आपको उठा के हम 2 दिन जेल में रख लें, आप बेटा बैठ जाओ, वॉर खत्म हो जाए फिर भेज देंगे वापस। क्या परेशान हो रहे हो, 2 दिन की तो बात है, बढ़िया खाना वाना मिलेगा। सो दैट्स द डिफरेंस एंड दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, सो दिस इज वेरी बेसिक, दिस इज वेरी क्लियर, वी हैव अंडरस्टूड दिस इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया पक्का? नाउ यू कैन टेक अ 5-minute break and then we will move to the law and CA. ठीक है, I'll bring back the slide in case you want to note something down from here. Go ahead.
चलिए, now we will spend some time on understanding citizenship and the law. Okay, so let's start. The primary law, the origin of citizenship, and it is not used a lot in modern day, is actually the Constitution of India. The Constitution of India is the foundational law on the citizenship, right? And the Constitution of Law contains provisions on citizenship in part 2. Okay, it contains citizenship provisions in part 2, right? And this part 2 is going to have certain provisions. You don't have to particularly worry about the articles, just that articles 5 to 11 of the Indian Constitution deal with citizenship. There is no corresponding schedule like there was with respect to territory. And any change to these articles of citizenship will require a special majority 2, which is a constitutional amendment under Article 368 without state ratification. Without state ratification. Okay? Now, we've understood this. Seems to be all right. Seems to be okay. Now, let's look at it as clearly as possible, as easily and as interestingly as possible, right? So, the provisions with respect to citizenship in the Constitution largely deal with two specific issues. First, how do you become an Indian citizen as on 26th January 1950, and what are the general principles of citizenship? Okay. Now, what the Constitution also does is that in Schedule 7, which contains the Union list on which only the Parliament can make laws, under entry 17 of the Union list, the Constitution empowers the Parliament to make other laws on citizenship. The Parliament uses those powers and creates what is called the Citizenship Act of 1955. This is the law which is actually used in the context of citizenship. This is sort of outdated, okay? This Citizenship Act primarily contains two very specific set of provisions. One is, how do you become an Indian citizen after 26th of January 1950, and how do you lose Indian citizenship? How do you lose Indian citizenship? And because this is an ordinary law passed by the Parliament under the discharge of ordinary powers under Schedule 7, this law
can be changed through a simple majority. And the makers of our laws have used it very intelligently, because it is these provisions which are actually used today. As on 26 January 1950 हो गया बाबा, खत्म बात. असल में कानून तो यहां इस्तेमाल होता है, right? And it is this Citizenship Act that we are referring to that has been amended multiple times. There has been no change whatsoever to these articles, because these are standard articles and not very utilitarian in their own right. Okay, not very utilitarian in their own right. But it is the provisions under the Citizenship Act which have been changed numerously. Okay, for example, this act was first changed in 1992, then in 2003, and most recently in 2019. So the protests and the controversy that you've heard of is actually a change to the Citizenship Act. And this is how it is called, the CAA 2019. All right? Understood? Okay. So these provisions are not important for the exam. Please don't waste your time memorizing these provisions. तो यहाँ पे क्या लिखा है? बहुत बेसिक बातें लिखी हैं कि as of 26 January क्या होने वाला है. Look at the mind that citizenship after we become a republic, after the constitution that comes into force, will be regulated through an ordinary law which the government can change at any given point of time. Whereas anything till then is in the constitution, so you're instilling a sense of confidence amongst the people. Telling the people on 26 January 1950, the new country that India is, that listen, your citizenship and the provisions of your citizenship are accurately guaranteed under the constitution. We've taken care of it, we've empowered it, and we'd be happy to go about it. Right? So as on 26th January 1950, what are the broad provisions that sort of become important? Why are they important, and what should we do about them? All right? So what are the basic provisions? First, you should have been an Indian domicile. You've been living in India at the time of 26 January 1950. Second, you would have migrated from Pakistan to India. Remember, we have to build the confidence of the people in the aftermath of the partition. Or you would have gone from India to Pakistan, not liked it, and come back to India. That is also perfectly fine. Nothing wrong with that. Or you chose the third option. You neither went to India, you neither went to Pakistan, you went to a third country. But had you stayed in India, you would have been perfectly eligible to become an Indian citizen. And that is how the word persons of Indian origin was born. That persons of Indian origin, or PIOs, are basically children or grandchildren of people who could have been an Indian citizen as of 26th January 1950. Alright? This today gets merged with a scheme called Overseas Citizens of India. Overseas Citizens of India are not citizens. It is a scheme for the diaspora of people of Indian origin, so that they can enter India as many number of times as they want to. They have to get an overseas card, and they get a multiple lifelong entry to India. Okay, so that is what it is. इसके ऊपर एग्जाम में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. And there are simple principles of Indian citizenship. These principles are very simple. One is that
you're a citizen of India and not any state of India. You are not a citizen of the states of it. Maharashtra, UP, MP, Bihar, Karnataka, उसके citizen नहीं हो आप India के हो. The states can have their own flags, that is okay. But that doesn't mean that you're a citizen of those states. That's the first part. The second part is that, boss, I understand what you're saying. I get it. As long as you are an Indian citizen, you cannot be the citizen of any other country whatsoever. As long as you are an Indian citizen, you cannot be the citizen of any other country whatsoever. Whatsoever. No questions asked. ठीक है? Clear on this? Yes? Now, this is something which is often debated, that countries like US and UK have something called dual citizenship. We have single citizenship. Countries like US and UK have dual citizenship. So you can be a citizen of US and you can also be a citizen of UK. You can hold two passports. In India, you can't. That is a crime. You can't do that. In the US, you can hold two passports. So the community, the intelligentsia, the intellectuals of the world say it is high time. India should also look at it. It helps in globalization. It helps in better movement of man and material. You're able to spread businesses better. You'll be able to have better bilateral relations with countries. You'll be able to really pamper your diaspora. But unlike US and UK, India is surrounded by arguably a hostile neighborhood. And therefore, there could be security implications. And that is why India at the moment does not actively consider any change in its single citizenship law. It's not on the agenda. It's not something that the governments of the day are even remotely looking at. Okay, understood? Now, we look at the real deal. So how do you become an Indian citizen after 26th January 1950? There are the following ways. First is by birth. Second is descent. Third is by registration. And fourth is naturalization. And fifth is incorporation. Incorporation. Okay? Now, each of these five mean five different things. As far as the CAA 2019 is concerned, naturalization is going to be back in focus. You don't have to memorize the technical details of these. They are never asked in the exam. And the Citizenship Act per se is actually not even in your syllabus. Anyways, so let's look at it. Let's understand what is it that we're talking about. Now, we basically have birth, which means birth within the territory of India, birth within the domestic territory of India. Okay? And we've got three timelines, which is broadly 1950 to 87. Then we've got 87 to 2003. And then we've got 2003 onwards. We've got 2003 onwards. Okay. And this 2003 actually gets implemented in 2004. So you can actually write 2004 onwards because the law gets enforced from 2004 onwards. Okay. Most of you would fall in the last two categories. Okay. Now, if you were born between 1950 to 1987, okay, if you were born between 1950 to 1987, yes, if you were born between 1950 to 1987,
In that scenario, as long as you are born on Indian soil, it doesn't matter who your parents were. As long as you are born in India, you are an Indian citizen, right? That is also to accommodate the movement of people post the partition and to sort of be more accommodative about things like these. And India has been very accommodative about, things like these. Really, very, very accommodative about things like these. So, for example, you will see a lot of refugee colonies. You will see a lot of land given to people, jobs given to people who had essentially migrated to India in the context of the partition. Between 87 to 2004, we had relatively strict laws, which was that not only should you be born in India, but both of your parents should also be Indian citizens. Both of your parents, birth plus both of your parents should be Indian citizens. Okay. But 2004 onwards, we've made the law even more open-ended, which is you should be born in India, no doubt. One of your parents has to be an Indian citizen, and the other parent cannot be an illegal migrant. The other parent cannot be an illegal migrant. Now, who's an illegal migrant? An illegal migrant is somebody who's in India without valid documents. And ladies and gentlemen, boys and girls, it is this very definition of illegal migrants which gets changed because of the CAA 2019. They changed the definition of illegal migrants as per the CAA 2019. Okay. So, as of today, if there's somebody who is born in India post 2004, should be born in India, one of your parents has to be an Indian citizen and the other parent cannot be an illegal migrant. And we've changed the definition of it for a certain set of people as per the amendment in 2019. Okay. Now, as far as descent is concerned, you are born outside India. You are born outside India, and at the time of birth, at least one parent is an Indian citizen, and within 1 year, you have communicated to the Indian embassy that you want your child to become an Indian citizen, and the child is going to be made an Indian citizen. You'll have to then surrender the citizenship of the country where the child was born in case the country provides absolute citizenship at birth, and then the child can become an Indian citizen. Okay? Understood this, right? Registration has a ton of what are called, provisions. Ton of provisions. One of them is that if you've lived in India for X number of years and you've married an Indian, you've lived in India for X number of years and you've married an Indian, then you can apply for citizenship under the registration category. And naturalization is that you've been living in India for long enough, you are so naturally a part of India, right? So for example, marriage is one of the ways of becoming an Indian citizen. Please don't memorize it, it's not important. Okay. With naturalization, there are two things that we must understand. One, of course, is the fact that you've lived in India for say 11 years. You know a language, तो मैं से दिन भर बिहू करता, भंगड़ा करता, basic language बोलता. You are more Indian than most other Indians. Then you can apply for citizenship under naturalization. All right. और तुमने इस देश की सरकार की क्या हेल्प करी है? You've really worked for the government of India, and as a reward, the government wants to naturalize you as an Indian citizen. तुमने इस देश की सेवा बाकी से ज़्यादा करी है. तुमको हम naturally India का citizen बनाएंगे. Or if you incorporate a territory, then the people are asked and they can maybe made an Indian citizen. For example, the 51 enclaves that we got from Bangladesh, right? We were studying this earlier. People were asked, do you want to be an Indian citizen? They said, yes, chalo, aajo, ban jao, express citizenship. Now you would understand that FDI is automatic route and approval route, correct? FDI is automatic route and approval route.
Okay. Similarly, citizenship is also automatic and approval. If you are a citizen, if you are eligible under birth and descent, if you are eligible under birth and descent, it is your right to get an Indian citizenship. मतलब it is your absolute right. तुमसे कोई ये छीन नहीं सकता, ठीक है, कोई भी नहीं छीन सकता, सबका हक है ये, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है. बट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन it is based on approval. You have to take approval. And who do you have to take approval from? Who is the nodal ministry for citizenship? The Ministry of Home Affairs. इनका काम है citizenship applications process करना, इनका काम है. Ministry of Home Affairs, not the Ministry of External Affairs. Home Affairs, क्योंकि आप इंडिया में आ रहे हो, तो आप यहां रहोगे, तो ये एक इंटरनल इशू है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है. दैट इज वाई होम अफेयर्स. सो द नोडल मिनिस्ट्री फॉर सिटीजनशिप in India is actually the Ministry of Home Affairs and not the Ministry of External Affairs, which is often considered a common mistake by several students. ठीक है, तो ये basic provisions है. So जो CA 2019 है, it has an effect on naturalization and it has an effect on the definition of illegal migrants. So इन दोनों चीजों की वजह से CAA 2019 में ये दो चीजों पे चेंज होता है, and that is how CAA 2019 becomes a major issue to deal with. ठीक है, we'll do CAA later, don't worry about it. And as far as the loss of citizenship is concerned, it's extremely simple to understand. ब्रेकअप कैसे होता है? या तो आप किसी और को पकड़ लेते हो, या आप पकड़े जाते हो, या आपने जो बोला होता है आप वो होते नहीं, राइट? So, that is exactly how there is a loss of citizenship. For example, आपने ही कहा कि मेरे को नहीं बनना, मेरे को दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप मिल रही है, मैं देश छोड़ के जा रहा हूं. You are renouncing Indian citizenship. So renunciation is one way of losing Indian citizenship. ठीक है. Second, आप दो टहला रहे थे. You are two-timing, and this is gender neutral. आप दो लोगों के साथ घूम रहे थे, पकड़े गए. इंडिया ने कहा कि भाई हमारे पास 130 करोड़ है, तू जा, तेरी जरूरत ही नहीं है, ठीक है. So this is called termination. If you were holding two passports and India found out, then your Indian passport can be terminated, your citizenship can be terminated. तीसरा, when you had filled a form to become an Indian citizen and you had given some false documents, some fake documents, तुमने कहा था कि तुम्हें Netflix पसंद है, you want sci-fi thrillers you like watching, Tinder bio में ये लिख के दिया था, जब जाके मिले तो पता चला और बालाजी पे गंदी बात देखते हो, है ना? तो क्या बोला था क्या निकले? And that is largely the issue of termination, and that largely is the issue of deprivation. आपने क्या बोला था और आप क्या निकले? So deprivation, बस misrepresentation of facts. And this is the legislative policy framework of citizenship. Under this, the government can also make certain citizenship rules, और ऐसे ही चलता है. Okay? Understood this? Are we clear with this? Yes? Sure? अब देखो, मैं जो बता रहा था ना आपको, यू कैन, ये नया फीचर है, ठीक है. PIO is basically your parents, your grandparents, or they could have been Indian citizens but they are not.
अब देखो, MHA, Ministry of Home Affairs, divisions, Foreigners Division, ये देखो, ओके, सर्विसेज डिपार्टमेंट्स, एक सेकेंड, हाँ, अनुराग स्वामी तो काफी समय से रह रहे हैं। OCI is nothing but a scheme. हाँ, इंडियन सिटीजनशिप, ये देखो, दिस इज योर इंडियन सिटीजनशिप पोर्टल, गवर्नमेंट ने प्रॉपर बनाया हुआ है, ठीक है, क्लियर ऑन दिस, ये देखो, ऐसे भर सकते हैं, इंडियन ओरिजिन, registration of a citizen who's been married to an Indian citizen, registration, minor child, parents who registered as citizens of India, parents who are either were parents of a citizen of independent India, who's registered as an overseas citizen and अब वो citizen बनना चाहते हैं, naturalization, देखो naturalization जब actually भरते हैं तो कैसे भरते हैं, ये देखो, ये है eligibility criteria, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट में के लिए हेल्प कर रहे हैं, 14 साल से काम कर रहे हैं, अब उसमें 11 साल की भी एक अपर लिमिट है, एक लैंग्वेज है 8 शेड्यूल की, उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करने पड़ते हैं, ये देखो, फॉरेन पासपोर्ट, आपका रेजिडेंशियल परमिट, 1500 रुपये लगते हैं, 2 इंडियन का एफिडेविट लगता है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स लगते हैं कि देखो हमको आता है, आपको एक रिकग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, या फिर 2 सिटीजन्स जो आपके डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उनसे, और कि न्यूज़पेपर में आपको इश्तिहार देना पड़ता है कि हम तो यहाँ इस देश में रहना चाहते हैं, ठीक है, ये सब कुछ होता है ऑनलाइन में सबमिट करने के लिए, ठीक है, बहुत बहुत काम है, ठीक है, सो दिस इज इट, विल डू द CA लेटर एंड देन विल स्टार्ट विथ थीम नंबर 3, so don't worry about it, done, sorted, ठीक है, now please read on the drive you will find a case study on the Citizenship Amendment Act, please read that case study, where is it, yes, CA plus NRC, इसको पढ़िएगा ज़रूर, and then we'll take it up from there, okay, all right, thank you.